1 can come with 2, 1 can come with 3, 1 can come with 4, 1 with 5, 1 with 6. मतलब एक डाई पे ऊपर जो टॉप आपका सरफेस है उस पे 1 आ जाए, इसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. व्हाट आर द चांसेस, क्या क्या आ सकता है? दैट इज these outcomes only make the ना total possible outcomes. 2 के साथ भी क्या आ सकता है? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, then it's 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Actually, why I'm writing? Actually, you can finish it up, but I want to tell one more interesting fact on this one. 4 2, 4 3, 4 5, 4 4, 4 5, 4 6, and 5 1, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, and 5 6. Okay, and last line is 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. Interesting fact is that a question when will be total outcomes you understood 36. कौन से 36 possible outcomes है? 1 1, 1 2, 1 3, 6. All 6 into 6, 36 possible outcomes are there. Now the question will be coming, what is the probability of getting sum? ये आ जाएगा getting sum. कौन सी इवेंट होगी? getting sum. क्या sum हो सकता है? sum of numbers on 2 dice. sum of numbers start होगा 2 से. Okay, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So what is the probability of getting sum 2? getting sum 2 मतलब दोनों जो डाइज हैं आपकी उसके टॉप पे क्या क्या आ जाए? इधर 1 और 1. और कोई आउटकम है क्या गेटिंग सम का जिसमें सम 2 आ जाए? देयर इज नो अदर पॉसिबल आउटकम इज देयर, ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज देयर. फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/36. तो वी विल बी टेकिंग इट डायगोनली. ओके, गेटिंग सम 3 के कौन से आउटकम्स आएंगे? दूसरे डायगोनल. या तो एक पे 1 आ जाए, एक पे 2 आ जाए, या एक पे 2 आ जाए, एक पे 1 आ जाए. सम करके देख लो बेटा. 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है. कितने आउटकम्स है? 2/36. गेटिंग सम 4 के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए बेटा? गेटिंग सम 4 के पॉसिबल आउटकम्स है या तो एक पे 3 आ जाए, एक डाई के ऊपर 3 आ जाए, और एक पे क्या आ जाए आपका 1 आ जाए. गेटिंग. और क्या हो गए? 2 2 और 1 3. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर गेटिंग सम 4. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3. तो ये आपका बेटा ऐसे 1 2 3 4 5 ये यू कैन फाइंड आउट डायगोनली. आप फाइंड आउट करके यू विल बी राइटिंग इन फेयर नोटबुक व्हाट आर द पॉसिबल favorable outcomes for getting 2. You have to write separately in your notebook. Okay, getting some 3 favorable outcomes, getting some 4 ये favorable outcomes है, getting 5, then 6/36, then for 8 what yours it will be going now 5 4 3 2 1. Okay, मतलब ये 6 तक आपका नंबर इंक्रीज होगा, then it will be decreasing. Okay, so that is easy to solve your question. 12 के लिए कौन सा फेवरेबल आउटकम होगा? बोथ विल बी हैविंग 6 6. 6 + 6 करेक्ट. ओके, फॉर दिस 11 व्हाट विल बी द आउटकम्स फॉर द 11? कैन यू टेल मी दैट? 6 5 5 6. टोटल सम विल बी कमिंग 11. तो इट इंक्रीजेस टिल 6, देन इट गोज. तो बाय दैट ऑल्सो क्वेश्चंस विल बी इजी टू सॉल्व व्हेन यू रिमेंबर द नंबर गोज इंक्रीजिंग टिल 6, देन इट गोज decreasing. Okay, so questions can be solved easily. And one more, which kind of questions are there on the deck of cards? Deck of cards मतलब you should know the distribution of cards. Okay, deck of cards. How many play cards are there? Total 52 play cards are there, and 52 play cards are divided into this these sample space. When you know now, you can solve easily the question. So that is the base of the probability. So 52 cards में you know how many? 26 are black cards and 26 are red cards. 26 are red cards and they are divided into 13. 13 के suits में divide होता है 4 suits are there. 13. Black में you get 13 cards of which one? Your club. That is your clubs. Club के 13 cards होंगे and 13 will be of your spade. 13 will be your spade. That is like that, है ना? Spade. Okay, and 13 रेड कार्ड्स में क्या आता है? एक तो हार्ट आता है आपका, हार्ट्स. 13 हार्ट्स में योर्स द शेप इज लाइक दैट. ओके, एंड डायमंड्स. 13 आर डायमंड्स.
You should know diamonds in this history. This will be of red color, this will be of red color, ये आपका black color है, ये आपका black color. Clubs and spade are of black color and hearts and diamonds are of red color. These are of 13, okay. So what is the probability of getting a spade? A card of spade. So 13 by 52. Favorable outcomes are like that. Okay, getting a card of club. Club का क्या होगा? 13 by. Getting a black card. Getting a black card मतलब 26 by 52. Getting a red card 26 by 52. Okay. अभी 13 are the combination of what? This 13. Each of 13 suit का जो combination है वो क्या है आपका? Numbers having numbers from 2 to 10. 2 to 10. And 4 cards are which one? Ace, King, Queen and Jack. You can see how many cards will be 2 to 10? 9 cards. 10, 11, 12, 13. All have this combination. But this is our 13 cards of club. These 13 cards will become of spade. These 13 cards will be of heart. Okay. And you know, these 4 cards are there now. Which Ace, King, Queen, Jack. Except the Ace. Means what? King, Queen and Jack are called face cards. Are called face cards. Okay. In each suit, these three cards are called face cards. So total how many face cards are there in deck of cards? How many total face cards are there? Total face cards will be yours 12. 3, 4 ja 4 suits are there. 3, 3, 3, 3. 3, 4 ja 12. Total face cards how many exist there? 12. Correct? So this is the base of probability. You need to first go through all this theory which I have explained. Then start solving question. There will be no problem. Thank you, students.